Hi everyone, welcome to the Learn for Exam show, the 10 p.m. practice class we are having today on coordinate geometry. Now आज मैं आप लोगों को एक ऐसा 30 मिनट्स में हम लोग ऐसा एक चीज सीखेंगे जो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे एंड we are going to learn something that's very very important and जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे who are appearing for the exams, they struggle a lot in these kind of questions. Now, I hope मेरी आवाज सबको आ रही है. Can anyone confirm? Can you just type me a yes in the chat pod that you can hear me clearly? Then that would become very 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 helpful for me. Just write a yes. We can hear you. That's fine for me. All right, that's great. So let's start off by a very important quote that I've always followed in my life, which is do not limit yourself. हम लोग like I have been teaching a lot of students since a lot of years now, and what one thing that you need to keep in mind is the moment you limit yourself, your opportunities are going to come low, right? So please ensure you are doing good in your life, and by doing good in your life it essentially means that you need to put in efforts. It essentially means that you need to be diligent at your own end, and only then you essentially go to that target goal or target, essentially the target goal of yours, right? So आज हम लोग जैसे कि मैं बता रहा था, we would be going through coordinate geometry, but before that, to make this entire journey very easy and productive for all of you, can download our apps. It's both available on the iOS store and the Android store. Just go to the description box below and you can see that over there. Download the app, you get a lot of content that's completely free of cost, right? So let's get started. Now, I have a very interesting question for all of you. आप लोगों को क्या लगता है, according to your experience in coordinate geometry, where do students struggle a lot? And consider yourself to be a student first, and then tell me आप लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे struggle करते हो as far as coordinate geometry is considered. Let's have that answer from all of you first. So let's take around 10 seconds, get that answered. Where do you people struggle the most as far as coordinate geometry is concerned? And this is also some place जहां से सबसे ज्यादा questions भी आते हैं एग्जाम पे. Any idea on that? Any idea? Centroid. Okay, centroid is a topic. Yes, centroid is a topic. But again, centroid से ज्यादा questions आपको मिलेंगे नहीं. The area जहां से आपको सबसे ज्यादा questions मिलेंगे वो है equations. There are 2 points, there is one line, there's another perpendicular line. What is the equation of this line? What is the equation of this line? 2 point के बीच में इस line का equation क्या होगा? So all of this has to be kept in mind. ठीक है? Now, these kind of questions again is very very important, because जो भी आप exam दोगे, be it CAT, be it SAT, be it SNAP, NMAT, IFT, जो भी आप exam दोगे, ये सारे question आते ही आते हैं. एंड दिस इज वन एरिया जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा फॉल्टर करते हैं. सो आज हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि बाय द एंड ऑफ अनदर 20 मिनट्स, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अनदर 20 मिनट्स यू आर एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बेस्ड आउट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इक्वेशन से आते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. नाउ द फर्स्ट थिंग, बिफोर आई बिगिन एनीथिंग एल्स, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. लेट्स से आई हैव अ पॉइंट, or let's take a line. Now I have a line which is this line, let's say AB. Now what do I essentially mean by the slope of a line? इस line का slope which is represented by M का मतलब क्या होता है? The meaning of slope of a line is essentially how much degrees is the line covered from the x-axis. So ये line x-axis से कितने degrees पे है, that is essentially the slope of the line. A very very important concept when it comes to solving questions on equations and solving questions on geometry. Now what is the formula for slope of the line? Let's say मैं दो points लेता हूँ, एक है आपका x1, y1, दूसरा है आपका x2, y2. The formula for slope of a line which is m is given by जो भी y coordinates हैं उसका difference which is y2 minus y1 divided by जो भी x coordinates है उसका difference which is x2 minus x1. ठीक है, this is a very very important formula.
The slope of a line is calculated by the difference of y coordinates divided by the difference of x coordinates. ठीक है? Now that we learn this, now that we know what is the meaning of slope of a line, let me quickly, delete this and get me a question. Let's solve a very quick question. ठीक है? Tell me, अगर मेरे पास एक लाइन है AB जिसके coordinates are let's say 2,5 and 7,9, can you people tell me इस लाइन का slope क्या होगा? Can you people tell me what would be the slope of this line if this line passes through these points? जल्दी जल्दी आंसर करके put it in the comment section. Alright, you people are saying it's 4 by 5, 0.8. Yes, absolutely correct. So इसका slope कितना होगा? M would be equal to the difference in y coordinate, that is 9 minus 5, which is equal to 4, divided by 7 minus 2, which is equal to 5. So 4 by 5 or 0.8 is the slope of this line. Perfect. Now that we understand what is slope of a line, let's understand what kind of questions essentially come जो equations में based होते हैं and उसको solve करने का तरीका क्या है? We'll first target the first question type 1. Now question type 1 कौन सा question type है? Let's say the most basic question जो आएगा आपके एग्जाम पे, which is हम लोगों ने बचपन से we have learned this, which is y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c is an equation of a line. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. This is the most basic equation of a line, जहाँ पे m means the slope of that line and c or the constant is essentially the intercept, the y-intercept that the line is having. Now, अगर मैं आपको एक example दूं, consider an example जहाँ पे I have a line जिसका slope is equal to minus half and जिसका y-intercept is equal to minus 4. Can you people tell me इस line का equation क्या होगा? What would be the equation of a line which has a slope of minus half and a y-intercept of minus 4? Let's do it very quickly. बहुत आसान सा question है, simple formula, nothing more. Slope minus half है, y-intercept minus 4 है. Equation का formula आपको screen पे दिख रहा है. Tell me what would be the equation's expression. Another 10 seconds, not more than that. Comment your answer in the chat pod. Vikas tells me it's 2y is equal to minus x minus 8. So let's find out the answer. Now slope कितना है? Minus half है, तो इसको simply यहाँ पे put कर दूंगा. Y-intercept कितना? Minus 4 है, तो उसको यहाँ पे put कर दूंगा. So essentially y is equal to minus half x plus of minus 4. इसको थोड़ा सा simplify करना पड़ेगा मुझको, which implies that 2y is equal to minus x minus 8. और आप x को इधर लेके जा सकते हो, 8 को भी उधर लेके जा सकते हो. The equation of a line would be 2y plus x plus 8 is equal to 0. This is the equation of this line. ठीक है? I hope this is clear to all of you. So what I'll do is मैं पहले इसको पूरा erase कर दूं, क्योंकि ये वाला जो स्लाइड है ये हमारा मास्टर स्लाइड बनेगा. हम लोग इस पे सारा कुछ टॉप टू एंड लिखेंगे on the question types that we might be seeing in our exams. ठीक है? Let me quickly rub this out. So let me take my pen. So question type 1 कौन सा है? जहाँ पे y is equal to m times x plus c.
आपको दिया क्या रहेगा, आपको m की वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा। अगर ये दोनों आपको दिया हुआ रहता है, सिंपली यूज दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, दैट वुड बी योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन टाइप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टाइप 2 एंड लेट मी also change to the next slide. Now question type 2 is the next one, जहां पे आपको दिया रहता है एक पॉइंट, आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि यार देयर इज दिस पॉइंट 2,3, can you tell me the equation of a line which passes through 2,3 and let's say has a slope of minus or has a slope of half? ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू माइट बी फेसिंग इन योर एग्जाम्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहता है और स्लोप दिया हुआ रहता है, देन वेरी सिंपलिस्टिकली द फॉर्मूला फॉर दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 टाइम्स m। ठीक है, जहां पे x एंड y तो चेंज नहीं होगा, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। y1 और x1 क्या है? ये जो मेरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स है। सिर्फ x1 y1 is equal to 2,3, ये जो मेरा पॉइंट है, राइट, x1 to be equal to 2, y1 to be equal to 3, m का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। मैं क्या करूंगा? सिंपली पुट दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इनटू दिस फॉर्मूला दैट आई हैव ओवर हियर। सो मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बनेगा? y माइनस y1, y1 का वैल्यू क्या है? 3, विच इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स m, m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था हाफ। इसको क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा? 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इज व्हाट यू गेट। अब आप क्या करोगे? x को इधर लेके आ जाओ, माइनस 2 को भी इधर लेके आ जाओ। तो एसेंशियली इसका मतलब क्या बना? 2y माइनस x, और ये माइनस 2 अगर इधर जाता है तो ये प्लस 2 बन जाएगा। सो माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू 0. So this would be the equation of this line, which is 2y minus x minus 4 is equal to 0. So let me go to the previous slide and let me tell you this again. So the second kind of question में आपको क्या दिया हुआ रहेगा? You would be given one point. एक point दिया हुआ रहेगा आपको. You would be given one point and then you would be given the value of slope. अगर ये दिया हुआ रहता है आपके एग्जाम पे, अगर क्वेश्चन पे ये दिया हुआ रहता है, the formula for that would be y minus y1 is equal to m times of x minus x. This would be the formula for this question type. If this is clear to all of you, अगर ये clear है, let's move on to the next question type. Next question type क्या है? जहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन एकदम नहीं दिया है, आपको जस्ट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यार व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर द लाइन हैज x एंड y इंटरसेप्ट्स एज समथिंग लाइक 2,3। अगर 2,3 आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स, what would be the equation of this line? अगर जस्ट इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेरी सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ बोला गया है 2,3 आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहता है, देन व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ योर लाइन? x by a plus y by b is equal to 1. This is the point intercept form, right? This is the point intercept form. इसमें a और b क्या होता है? a and b are nothing but the x and y intercepts given in the question. So a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3. It's as simple as that. ये सबसे easy type of question होता है जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। Now, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन की 2 and 3 are the x and y intercepts का इक्वेशन निकालो, तो सिंपली आप पुट कर दो x by 2 plus y by 3 is equal to 1. That essentially means that 3x plus 2y is equal to 6. So ये बन गया आपके equation of the line, right? So 3x plus 2y is equal to 6, या फिर 3x plus 2y minus 6 is equal to 0. Both of this are equally similar, right? So अगर मैं फिर से let me go to the previous slide. Let me tell you the third question type. मेरा third question type क्या है? It is, ये तभी यूज होगा जब आपको क्या मिलेगा? जब एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा व्हाट आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स।
अगर गिवन है क्वेश्चन में x and y इंटरसेप्ट ये है, then the formula for that would be x by a plus y by b is equal to 1. It's as simple as this. Now let's move on to the most important kind of equation. Let's move on to the last type of question that you might be getting. Now in this question आपको information जो दिया हुआ रहेगा वो ये रहेगा कि for example there are 2 points, these are the 2 points, can you tell me the equation of a line that passes through these points? So आपको 2 points दिए हुए रहेंगे and you have to you will be asked कि इस equation का line क्या होगा, इस line का equation क्या होगा, I'm sorry, what would be the equation of this line? So let me assume that the points that I have is x1 comma y1 and x2 comma y2. ये मान लेते हैं. Let me assume that these are the 2 points that is given in the question. मुझको इसका लाइन निकालना है. Now how do I calculate this? Very simple है. हम लोगों ने एक चीज सीखा था बहुत स्टार्टिंग में, which is, let me go back here, which is y is equal to mx plus c, है ना. इसके रेस्पेक्ट पे ही और एक और I taught you another formula which is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now इसके इन दोनों में से एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे and we'll get the same answer for this. The formula that we would be using is एक extended version of the second formula. कौन सा है? Now m का वैल्यू मुझको ऑलरेडी पता था. You people already remember the value of m. m का मतलब क्या था? It was the slope of the line which is got by calculating the difference in y coordinates and the x coordinates. ये था m का वैल्यू. ये सेम चीज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है. सो एसेंशियली y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1. और इसको अगर आप सिंप्लीफाइड वे में देखना चाहते हो, आप y2 minus y1 को इधर लेके आ जाओ और इसको इसके ऊपर चढ़ा दो. तो एसेंशियली इक्वेशन क्या बनेगा? y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. This is what we would be getting. Most important formula, सबसे important formula है जब when it comes to questions around coordinate geometry, around equations of a line. So दिया हुआ क्या रहेगा? It would be given 2 points. So let's assume that the 2 points are 2, 3 and 4, 6. Can you now tell me what would be the equation of a line if it passes through 2, 3 and 4, 6? Let's get the answers in the chat box. जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए what would be the answer for this one. सिंपल है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिंपली y 2, 3 and 4, 6 को y1, y2, x1, x2 के फॉर्म पे डालना है. सो x1 का वैल्यू लिख लीजिए 2, y1 would be equal to 3, x2 वैल्यू would be 4, y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 6. ये सेम चीज यहाँ पे पुट कर देंगे. तो एसेंशियली क्या बनेगा मेरे पास? y minus y1 which is equal to 3 divided by y2 minus y1 मतलब 6 minus 3 जो कि हो जाएगा 3 is equal to x minus x1 मतलब x minus 2 divided by x2 minus x1 जो कि हो जाएगा आपका 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. what would you get? You would get 2y minus 6 to be equal to 3x minus 6. So minus 6 दोनों साइड से कट जाएगा. लास्ट में आपका बचेगा 2y is equal to 3x. The same thing is now put in the last slide. Let me put this on the last slide. So question type 4 जो आपका होता है वो ये होता है कि अगर आपको 2 points दिए हुए हैं, if you have 2 points at your own end, then what would be the equation of a line? The equation for this line would be y minus y1 divided by y2 minus y1
is equal to x minus x1 divided by x2 minus x. This would be the equation of this. So देखो बहुत अच्छे से समझ लो क्वेश्चन टाइप 1, अगर स्लोप ऑफ अ लाइन एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सो दैट बिकम्स y is equal to mx plus c. अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, देन इट बिकम्स व्हाट, y minus y1 is equal to the slope times x minus x1. अगर सिर्फ y and x इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, then x by a plus y by b is equal to 1. अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, then y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. I hope this is clear to all of you. Now, before I move to two very important questions जो मैं आज क्लास के लिए लाया हूं, दो चीज बहुत फटाफट जान लेते हैं. If there are two parallel lines, let's say this is line 1 and line 2, अगर first line का slope half हुआ, तो second line का slope कितना होगा? Half ही होगा. If I have two parallel lines at my end, the slope for these two lines has to be equal. Slope of two parallel lines is always equal. This is point 1. Point 2 ये है कि if I have two lines which are perpendicular to each other, let's say this is line 1, this is line 2. Line 1 का slope is equal to, अगर half है, then line 2 का slope कितना होगा? The slope for the second line would be equal to -2. Because if there are two lines which are perpendicular to each other, the product of the slopes for these two lines is -1. So m1 times m2 हमेशा -1 रहता है. अगर एक स्लोप आपका हाफ है, दूसरा स्लोप कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा. ठीक है? With this information, let's move and solve this question. इसके लिए मैक्स टू मैक्स हम लोग 60 सेकेंड्स लेंगे, उससे ज्यादा एकदम नहीं लेंगे. Let's solve out this question. Will only take 60 seconds. एकदम difficult नहीं है. Last 20 seconds. Okay, I have some answers. Y plus 3x is equal to 7 is what you people are telling me. So now let's solve out this question. Now इस question में पहले तो देखेंगे information क्या given है. एक point given है. That means question type 3 और question type 4 ये cancel out हो गए. ये दोनों possible नहीं है क्योंकि एक point given है ना? क्वेश्चन टाइप 3 में इंटरसेप्ट दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चन टाइप 4 में 2 पॉइंट्स गिवन रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. y इंटरसेप्ट भी नहीं दिया हुआ है, दैट मींस क्वेश्चन टाइप 1 भी कैंसिल आउट हो गया. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन टाइप 2 करेंगे, यूज करेंगे. उसका फॉर्मूला क्या था? y minus y1 is equal to m times x minus x1. x1 and y1 क्या है? दिस इज दिस पॉइंट. सो x1 की वैल्यू आपकी है 3, y1 की वैल्यू आपकी -2. और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझको? m की वैल्यू चाहिए. इस क्वेश्चन में m की वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू? इट्स गिवन दैट द लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना? और हम लोगों ने पहले स्लाइड में ही पढ़ा कि अगर पैरेलल होता है देन स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है. सो पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 6y इज इक्वल टू 3x minus 4. दिस इज द इक्वेशन. अच्छा, तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से पूरा डिवाइड कर दो, 3/6 x minus 4/6. इसका तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ स्लोप की वैल्यू देख रहा हूँ. The value of slope is 3/6 or the value of slope of this line is equal to half, right? So m is equal to half. Now m का वैल्यू पता है, x1 y1 पता है, दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So y minus y1 that is +2 हो जाएगा is equal to m which is half
टाइम्स ऑफ x माइनस x1 दैट इज x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 और एसेंशियली 2y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 2y minus x plus 7 is equal to 0. Aishi got it correct, and I hope all of you who solved out and who saw question types, all the 4 question types got it correct as well. ठीक है। रौनक, मुझे आई गेस फॉर यू आल्सो इट्स क्लियर। देखो, द ओनली एरिया जहां पे आप लोग गलती कर सकते हो वो है कैलकुलेशंस में, सो प्लीज उसमें थोड़ा सा फोकस रखिए, तो कैलकुलेशन में गलती प्लीज मत कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सी कौन कौन ये वाला कर पाता है। अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। गोयल बेटा, हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे, हर दिन 10 बजे आ जाना और मतलब मजा आएगा तुमको, मैं ये बोल सकता हूँ। ऐसे ऐसे चीजें सीखोगे जो एग्जाम के लिए मतलब बहुत सही रहेगा, और हम लोग वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा भी। सो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड द क्लासेस। चलो आंसर्स आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। फिर से एक पॉइंट गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है ना। सो दैट मीन्स अगेन क्वेश्चन टाइप 2 से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप 2 मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये मुझे फॉर्मूला पता है ना। x1 y1 का तो वैल्यू पता है, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू माइनस 2, बट पता क्या नहीं है, m की वैल्यू। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर है एक और लाइन के साथ, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसका m निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। इक्वेशन क्या है, 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, y प्लस 5/8 इज इक्वल टू 1/4x। सो मेरा जो m का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/4। नाउ m इज इक्वल टू 1/4, सो x1 y1 मिल गया, m मिल गया। अभी क्या करना है, सिंपली इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। सो y माइनस y1 दैट इज प्लस 2 वुड बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स x माइनस 2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y प्लस 8 बन जाएगा आपका x माइनस 2, और 4y प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब x को यहाँ पे भी लिख सकते हो, 4y माइनस एक्स प्लस 10 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ना देखो, बहुत मतलब द बेस्ट थिंग ओवर हियर इज आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना। मैं फिर से उस स्लाइड पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The point over here is कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या लेना है, QT1 लेना है या QT2 लेना है, या क्वेश्चन टाइप 3 लेना है, क्वेश्चन टाइप 4 लेना है। बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा। अगर आपको 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला क्या यूज होगी, अगर आपको ये पता चल जाता है, देन दैट्स इट, क्वेश्चन में और कुछ बाकी नहीं है ना, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, ठीक है। ऑल राइट, ओके चलो। तो एक और चीज जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला गया था ना, तो अगर इस लाइन का इक्वेशन 1/4 है तो मेरा स्लोप 1/4 नहीं होगा, सॉरी, ये -4 होगा। प्लीज टेक अ नोट, ये -4 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो -4 से यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा आपका, y प्लस 2 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x माइनस 2 आएगा, which is equal to y plus 2
इज इक्वल टू -4x प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा y प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अगेन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई गलती आप ना कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर यू कीप एवरीथिंग इन माइंड। बट अगेन सो ये 4 टाइप ऑफ इक्वेशंस आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो उस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट मैंने मुझे प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। स्क्रीनशॉट अगर रखना है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत हेल्प होगी। एंड आज के बाद आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछेगा तो आप लोगों में से ये गलती कोई नहीं करोगे। उस क्वेश्चन को विद इन 60 सेकेंड्स निकालोगे एंड एक्यूरेटली निकालोगे, राइट। एवरीवन क्लियर विथ ऑल द 4 क्वेश्चन टाइप्स जो डिस्कस हुआ सेशन पे? सबको क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज मेक श्योर ये आप दिमाग में रखो। हर एग्जाम पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। So please make sure you are good to go with this topic. ठीक है? Good to go within the stipulated amount of time. ठीक है? So with that, I was to take this till this itself. तो इसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए in terms of courses, in terms of तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो हमारे कोर्सेज। अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स हमको ई बुक्स चाहिए, कीप अ नोट दैट वी आर यूजिंग अ 10%, वी आर गिविंग आउट अ 10% डिस्काउंट फॉर ई बुक्स। यूज दिस कोड, गेट 10% discount. If you want any ebook, you can simply go to our website, purchase the ebooks. The test series are also available. If you want to purchase the test series, simply log into learnforexam.com. वहां से आपको directly access मिल जाएगा. So this is something that I always wanted to show. Again, study abroad अगर जाना है तो contact us on this number 7982139467. हम लोग आपको help करेंगे. And this includes no fees at all. So WhatsApp करो if you want to know more about this. And these are all the feedback that we have over here in our groups. अगर कोई भी query है आपको CAT related, NMAT related, SNAP related, कोई भी MBA exam related, तो हमको WhatsApp कीजिए। टाइमिंग्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे, 11 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे हम आप पिंग कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट होता है हम उसको क्लैरिफाई आपके लिए कर देंगे। These are the 2020 results you can see on my screen. बहुत ही काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे हमारे। So make sure you understand all of this and these are the reviews. So you can pause the video and check out these reviews. Now I also am seeing that कुछ क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि नहीं। यस, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्या करना है, वो 4 क्वेश्चन टाइप्स दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन देख के ये पता करना है कि कौन से क्वेश्चन टाइप के साथ मेरा चल रहा है एंड उसी फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है? आई होप द सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल टू यू। आई विल अगेन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। I'll take a session on arithmetic or in number properties or in PNC probability। जो भी आपके लिए यूजफुल होगा वो ऐसा सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे। कल भी एक सेशन होगा, सो मेक श्योर यू आर लॉगिंग इनटू द चैनल टू सी कौन सा सेशन है कल के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो हमको व्हाट्सएप कीजिए। विल हेल्प यू आउट विद ऑल ऑफ योर क्वेरीज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड